Hi guys, welcome back to the channel and welcome to this MBA podcast. I have pretty smart Swati with me. She hails from SRCC by the way, जो दिल्ली का बहुत बड़ा brand है. Number one institution in the country for BCom. And surprisingly, she has joined BIMM Trichy by the way for her MBA program. And she's got into India's number one credit rating company, I would say. Swati, welcome on board. I'm really happy to have you. एंड आई हैव दिस क्वेश्चन यार विच इज़ बॉदरिंग कि यार SRCC से आपने ग्रेजुएशन करा एंड यू हैव बिन स्कोरिंग 98% इन 10th 12th एंड ग्रेजुएशन है. यू आर एकेडमिकली सुपर ग्रेट. उसके बाद लेट्स यू गॉट राउंड अबाउट 75 percentile in CAT and you chose BIMM Trichy. You could have gone for 1 or 2 attempts in CAT and could have targeted Blackie or MDI Gurgaon and XLRS of the world because SRCC के बच्चे mostly उन brands में जाते हैं. So my first question, why BIMM Trichy after SRCC? First, I am a person who's interested in finance, and BIM has a extremely great infrastructure for finance. We've got great faculties who have done a lot of research in that area. And in addition to that, we have also got Bloomberg terminals and NSE's smart trading simulators. ये जो Bloomberg और trading simulators है ये ज़्यादातर IIMs पे भी नहीं होते. So infrastructure बहुत अच्छा है and BIM has a good brand name. It has 40 years of legacy. So it was just natural for me to choose BIM. By the way, बहुत सारे बच्चों को नहीं पता है because BIMM Trichy मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा ना अंडररेटेड है. बट मेरे कुछ बच्चे हैं जिनसे मुझे BIMM Trichy के बारे में पता चला. जैसे राहुल करके मेरा बच्चा है, ही स्टार्टेड विद BIMM Trichy एंड ही हैज डन अ फिनोमिनल जॉब बाय द वे. सो कॉलेज ओवरऑल अगर आप देखोगे इट्स अ फैबुलस ब्रांड. 40 years old है जैसे स्वाति ने कहा. एंड अगर आप देखोगे 20 साल पहले ना ये मेरे ख्याल से IIM Trichy के भी थोड़ा सा बेटर था बिकॉज प्रोफाइल काफ़ी अच्छी थी. एंड अगेन इट्स लेड बाय असित सर हु इज द IIM अहमदाबाद एलुमनाई. सो येस इनका इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत सही है. एंड स्वाति करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग यार कि BIM में SRCC नहीं, मेरे ख्याल से कॉलेजेस लाइक जेवियर्स हो गया, स्टीफन्स हो गया, इसके भी आपको बच्चे दिखते हैं. सो वो जो क्रीम क्राउड है जैसे IIT NIT होते हैं ना गाइज, वैसे SRCC जेवियर्स वाले भी बच्चे आपको BIM में दिखेंगे, है ना. कूल है. Yeah. So how has been your experience in BIM? Like, are you happy the way they are teaching you? Like SRCC का brand up. SRCC is known for finance. Come on. So are you happy with the entire stuff? I am actually extremely cohort of 120 students per batch. So आपको individual attention मिलता है ज़्यादा. आपका जहाँ आपका strong area है, आपका जहाँ आपका shortcomings है, small batch size की वजह से आपको individual attention. Okay, that's fair. तो जहाँ पे compared to the institutions which has a 500 students per batch, just amazing. We have a lot of guest faculties and in-house faculties also. They are just great. And which company you made it to for your summer internship? If you want to make a mention about that. I've been selected in CRISIL. CRISIL is a big brand by the way. जिन बच्चों को नहीं पता finance में, I interviewed earlier स्वाति का senior जो CRISIL में ज्वाइन करेगा अभी. एंड CRISIL इज़ अ वेरी वेरी गुड प्लेटफॉर्म अगर आपको इन्वेस्टमेंट बैंक में वेंचर करना है. अगर आप 2-2.5 साल, शी इज़ तो गोइंग फॉर इंटर्नशिप, बट अगर आपको PPO वगैरह मिल जाता है तो आप 2-2.5-3 साल काम करो CRISIL में. फिर भाई साहब आपको PwC हो, EY हो, डेलाइट हो, हंसते खेलते उठा लेगा. कंपनीज लाइक गोल्डमैन सैक्स, JP मॉर्गन स्टैनले, डॉइचे बैंक, ये भी आपको हंसते खेलते उठा लेंगे. एंड देन देयर इज समथिंग कॉल्ड एज MBBs, एवेंडर्स एंड मक्वेरी, वहाँ पे भी आपको एंट्री मिलती है बिकॉज CRISIL इंडिया का बहुत बड़ा ब्रांड है. जैसे बाहर मूडीज़ है, S&P क्रेडिट रेटिंग जो कंपनीज हैं, वैसे CRISIL है. सो ये प्लेटफॉर्म मिलना भी बहुत बड़ी बात है. सो स्वाति अगेन आई वुड लव टू अंडरस्टैंड के सो यू हैव अ फिनोमिनल प्रोफाइल, राइट? एंड आई एम वेरी श्योर तुमने बाकी कॉलेजेस को भी अप्लाई करा होगा. सो ऐसे कौन से कॉलेजेस थे जो आपने कन्वर्ट करे और उनको छोड़ छाड़ के आप BIMM Trichy आ गए? मुझे ग्रेट लेक्स गुड़गांव से भी कॉल आया था. जो स्पेशलाइजेशन एरिया है वो इस इंफ्रास्ट्रक्चर इज वेल नोन फॉर इन दिस स्पेसिफिक एरिया. सो आई काइंड ऑफ चोज BIM. सो बिकॉज यू वर मोर इंटरेस्टेड इनटू फाइनेंस, आपने BIMM Trichy को चूज किया. बाय द वे अगर आप देखोगे ना, एक छोटा सा फर्क मैं बता रहा हूँ यहाँ पे. ग्रेट लेक्स गुड़गांव जो है वो बहुत ज़्यादा बच्चों को पता है. ग्रेट लेक्स एज अ ब्रांड बहुत ज़्यादा बच्चों को पता है ओवर एंड अबव BIMM Trichy. बट फिर भी somebody who is coming from SRCC
chooses BIM Trichy over and above Great Lakes matters a lot. It means that the brand, though it's a little underrated or not very well known to the students, but has a lot of potential, by the way. So Swati, more than that, I would love to understand a couple of more things, because now there are so many students. They have got 80 percentile. I think आपका प्रोफाइल अच्छा था इसलिए आपका 75 percentile में कन्वर्जन हुआ. So जो बच्चे 80-85 वाले हैं और अगर उनको MBA मार्केटिंग करना है, MBA फाइनेंस करना है, why they should be choosing BIM Trichy? If you can give us 2-3 bullet points, that will be really good, yaar. Okay, so BIM is first, it's a great place to be in. You get a lot of networking opportunities, and आप जो इंस्टीट्यूट 40 साल से चलता आ रहा है उनका अलुमनाई बेस देखो. हाँ, we almost have like 4,500 alumni all over. True that. I had an alumni who is currently working in Goldman Sachs. He came for a guest lecture. Oh wow, that's nice. Like some of them are even in Google. Okay, Google, I believe. So six levels as well. And many of them have their own startups, and they are one of our alumni even has his own fund that he manages. He's a fund manager, his own fund. So it's a great place to be in. All right, cool. So guys, I think that's it from our side. Swati, thank you so very much for giving some time यार. And guys, अगर आपका परसेंटाइल कम है, अगर आपकी प्रोफाइल बहुत अच्छी है, आप BM के लिए अप्लाई कर सकते हो. And you will meet these great people यार, all these think tanks from SRCC and Xaviers of the world, and you'll be having a good time with them. Swati, thank you so very much for joining in. Take care. Bye bye. Thank you. Thanks for having me. Thanks. Bye bye.